Good evening, students, and welcome to the second live class of BITSAT. Welcome to the second live class of BITSAT today, or I hope you are joining fast. I'm waiting for students to join. So hope आपने कल का लेक्चर देखा होगा. I think all the class notes are uploaded and the description in the description link all the notes are given over there through that link. So click on that link and you will get all the class notes for the class of yesterday. Okay. So can we start today's class or should we wait? Okay, I'm waiting for some more students to join. So today's class is primarily based on the non-verbal reasoning part, as you will see later on, जो मैं आपको अभी बताऊंगा. These are the topics that we are going to do today. Okay. So these are the topics I am going to do. Dice, क्योंकि dice कल छूट गया था. So we'll have a very small introduction. Dice is primarily considered to be a verbal reasoning topic. Okay. So dice is again logic based just like cubes. And then comes the non-verbal part. बहुत सारे non-verbal topics हैं. Okay. फिगर मैट्रिक्स है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, फिगर फॉर्मेशन है, डॉट सिचुएशन है, मिरर एंड वाटर इमेजेस है, एंड फाइनली विल हैव अ रिवीजन. नाउ रिवीजन विल प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सीरीज, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू टुडे. ओके, सो आई विल वेट फॉर जस्ट 1 more minute बिफोर आई स्टार्ट द क्लास. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. So please, I mean, this is my personal preference that you give your true names, right? Whenever you log in, right? These alias names is creating confusion. Okay, so I mean, this is my personal opinion about it. Okay, चले हम लोग शुरू करें. Should we start now? Okay, so we are going to do dice. First, we're going to do dice. Dice में will not waste or will not invest too much time. Nothing is waste. Invest too much time. And what do we mean by dice? Okay, आपने dice तो देखी होगी. Standard dice है. You must have seen a dice. Standard dice की खास बात क्या होती है? It has got 6 faces. It has got 6 faces. Okay, so when I draw a dice like this, if I draw a dice like this, okay, so sorry, like this. This is what a dice looks like, right? जैसे हमने कल क्यूब में देखा था, मैंने ऊपर से साइड व्यू दिया मैंने डाइस को. Now, if I open up a dice about a particular face, मैंने डाइस को खोल दिया है. Now, there are 2 kinds of dices. One is a standard dice. What is a standard dice? जो आप हमेशा जैसे खेलते हो लूडो में, right? Standard dice में होता क्या है? The sum of the numbers on the opposite faces is 7. 1 के opposite 6, 2 के opposite 5, 3 के opposite 4. This is what we know. But when the logic is not like that, when the sum of the numbers on the opposite faces is not 7, then it is a non-standard dice. And questions are primarily asked from the non-standard dice. Okay, तो अगर मैं dice को suppose करो मैंने एक पेपर को fold किया, and by the way next topic is paper folding only, तो वहीं से मैं यहीं से उस topic में जाऊँगा, right? When I open up a dice about a particular face, then this is what the dice looks like. मैंने एक डाइस को एक पर्टिकुलर फेस के बराबर ओपन किया है, तो दिस इज व्हाट अ डाइस विल लुक लाइक. ओके, राइट, कि मान लो ये फेस के ऊपर
इधर ओपन किया, मान लो इफ आई गिव दिस नेम एज, से इफ आई पुट अ नेम लाइक दिस, से दिस इज ए, ओके sorry, this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, and this is F, right? Okay, so if I put a name like this, and if I put the letters here, what am I seeing? This is A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, this is D, this is E, and this is F. So now I can say that A के opposite है F, D के opposite है E, B के opposite है C. So this is the deconstructed dice. एक dice को मैंने एक face के बराबर open किया है, then this is what a dice will look like, right? Again, if I fold up the dice from that point to normal to this way, this is what a dice will look like. So this is a constructed dice and this is a deconstructed dice. Clear or not? ओके अब इसी पे हमें थ्योरी को डेवलप करना है. सो ऑलवेज व्यू द डाइस एज एन ओपन डाइस व्हेन द डाइस इज हैज गॉट ऑल इट्स 6 फेसेस ओपन, एंड देन अकॉर्डिंगली यूज प्रॉपर लॉजिक. ओके, तो अगर आपको ये डायग्राम पता लग गया तो आपको पता, अगर आपके पास ये डायग्राम है तो यू कैन से दैट ए के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट सी एंड ई के अपोजिट डी. So there are various forms of deconstructed dice. One of these forms is like this. Now if the dice is like this, वही इसी dice को मैंने यहाँ पे लिखा है. So if the dice is like this, I can say अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, if it is written like this, I can say here that 1 is opposite 5, 3 is opposite 6, 2 is opposite 4. 1 is opposite 5, 2 is opposite to 4, and 3 is opposite to 6. Clear? ऐसे ही अगर मैं डाइस को दूसरी तरफ से, दूसरे बॉटम राइट फेस से अगर मैं बेंड करूंगा या मोड़ूंगा, सो इट विल बी लाइक दिस. नाउ इन दैट केस 1's opposite face is 6, 3's opposite face is 5, 2's opposite face is 4. राइट? सो रिमेंबर, आई मीन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिमेंबर व्हाट इज ऑपोजिट होता है. 2 is opposite 4, 3 is opposite 5, 1 is opposite 6. Clear? Or the dice can be opened up like this as well. The deconstructed dice will be like this as well. So in that case, 1 is opposite 3, 4 is opposite 6, 2 is opposite 5. Right? Okay. So I hope you got this concept of deconstructing a dice. Right? So only thing you need to do is you just draw the dice properly. Right? In fact, जब आप experience हो जाएंगे, you don't even need to draw it. Okay, just look at the diagram. Various views will be given of the dice. Top view will be given because all 5 views, आपको 3D view तो आपको मिलेगा नहीं on a 2D page. So you will be given various views of the dice, and then you will be asked questions कि किसके opposite क्या है. Right? So this is just a part of verbal reasoning. Okay, so let's look at this question. Observe the open dice. The number of a possible combination is what? ये एक डाइस है जो ओपनड है. अब आपको बताइए कि इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो कौन सा डाइस पॉसिबल होगा. थिंक अ लिटिल बिट. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. इफ आई रोल अप द डाइस, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल फॉर्मेट ऑफ दिस डाइस. Okay, any answers? If you closely look, then I can say 1 के opposite में है 6, right? 2 के opposite में 4, 3 के opposite में 5. Now in the first case, if you see 3 के opposite में 5 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, right? 3 के बगल में 5 दिख रहा है, यानी कि this is not possible at all. In the second case, 2 के opposite में 4 है, but 2 के बगल में 4 है. So this is also not possible. And the D option, if you see, 1 के opposite 6, but 1 के बगल में 6 है, which means D is also not possible. Correct option is option number C. Clear or not? Correct option is option number C. Right? Yes.
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके, आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मैं बढ़ाता हूं, लाइक दिस। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। लुक एट दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड टेल मी द आंसर। How many points will be on the face opposite to the face, in face है, opposite to D face होना चाहिए यहाँ पे, so small mistake here, opposite to the face which contains 2 points. So 2 के opposite में क्या होगा? Okay, so what will be the answer? Think a little bit, jaldi and tell me the answer. Okay, beautiful, very good. ईशानवी and Mukul, very good, बहुत अच्छे. Okay, Samarth is also correct. Okay, see this, see the options. I don't think it's correct. Look at the options and you can see here that if I draw a dice like this and if I draw a 5, you just draw a dice like this. And you draw like this. You can find it yourself. 5 के बगल में 4 and 6 है, 5 के बगल में 4 and 6 है, 5 के बगल में 3 and 2 है, so 3 and 2 ये भी हो सकता है, या 2 and 3 ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेट्स सी, थर्ड फेस में 2 के बगल में 1 है. ओके, सो 2 के बगल में 1 है और 2 और 1 के बगल में 3 है. ओके, सो 1 के बगल में 3 है, 2 के बगल में 1, 1 के बगल में 3, 6 के बगल में 4, सो 6 के बगल में 4 एंड 6 के बगल में 1. दिस कैन बी पॉसिबल, विच मीन्स दिस इज द रॉन्ग assumption, दिस इज द करेक्ट assumption, यानी कि 2 के अपोजिट में होगा 6. The answer for this question is option number D. I am very sorry, I am writing down with a black ink, just once again drawing it. This is 5, this is 4, this is 3, right? 5, 4 and 2, right? Okay, so 5, 4 and 2, sorry, 5, 3 and 2, I am very sorry here. So, a small correction here. So, 5, 3 and 2, okay. So, like this, if I can draw like this, 5, 3 and 2, okay. And 5, 4 and 6. So, you can draw like this, 4 and 6. Third diagram, 3, 2 and 1, we can do like this, 2 के बगल में 3 and 1. And fourth में हम verify कर सकते हैं. So, 6, 4 and 2. So, 6, 4 and 2. 6, 4 and 1. Right? So, answer for this question is option number D, 6. Okay. Right? So, let's move to the next question. Okay. Which is correct? 1 is opposite 4, 3 is opposite 6, 6 is opposite to 1, 5 is opposite to 2. Think a little bit. Okay. यार ये क्वेश्चन देख के बहुत ही आसान हो रही है, हमें ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं है. इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. थिंक अ लिटिल बिट.
which is correct. Now if you closely look the second diagram, हमें से पॉइंट के बाद देखना है 5 and 2, 5 and 2, 6 इधर है 1 इधर है, यानी कि 6 के ऑपोजिट 1 होगा, हमें आगे देखने की जरूरत तक नहीं है, राइट. फर्स्ट डायग्राम यू डोंट नीड टू सी. ओके, 5 to 6, 5 to 1, यानी कि 6 इज ऑपोजिट टू 1. टू फेसेस आर सेम, विच मीन्स 6 के ऑपोजिट में 1 श्योरली होगा. क्लियर और नॉट? So the answer for this question is option number C. Very good. Right? तो sometimes confuse करने के लिए बहुत कुछ दी जाती है, but the question is turns out to be very easy. अगर आपका visualization पे जो पावर है वो अगर सही है, सिर्फ देखो ये दोनों फेस दोनों में कॉमन है, तो इसके ऑपोजिट ये तो होना ही है, राइट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 के ऑपोजिट में है 6, राइट. ओके, कैन वी मूव एट नाउ? Okay, let's move on to the next question. Select the dice that can be found by folding the given sheet along the line. कौन सा डाइस बनेगा अगर मैं डाइस को फोल्ड करूंगा तो? Tell me the answer. Meanwhile, if you want to have any doubts, and we have a dedicated channel for PYQs of all the previous examinations, we have got a dedicated channel of VMC. The description of that is given in the description box. The links to access, even if you want to visit my class notes for the previous class, for today's class, all are given in the description box. So link is activated, you can visit the link, and you can also visit the VMC channel for PYQs, specifically for PYQs of all the major JEE examinations, major engineering examinations, like जैसे ये हो गया BITSAT हो गया, right, JEE advanced हो गया, whatever it is. So all that link is given in the description box. Okay, so please visit that link and like and subscribe our channel as well. Okay, that gives us a little bit of boost of motivation. Okay, coming to this, select the dice that can be found by folding the given sheet along the line. कौन सा डाइस बनेगा? बहुत आसान है, वेरी इजी. बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है. देखो यार, यहाँ पे दिख रहा है 4 2 3 बगल में है, तो 4 2 3 तो यही दिख रहा है, बी ऑप्शन है. यू डोंट हैव टू मूव फॉरवर्ड, डन. बी ऑप्शन इज द आंसर, राइट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. तो इस तरह के ही क्वेश्चन रहते हैं, राइट. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती, और डिफिकल्ट होनी भी नहीं चाहिए. अगर आपका ये डायग्राम क्लियर है, राइट, तो इट विल बी वेरी इजी टू डिसाइफर द होल लॉजिक. ओके, आगे बढ़े हम लोग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिंस वी हैव टू डू अ होल लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे. डाइस इज ओनली वन पार्ट ऑफ दैट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, विच इज द पेपर कटिंग. व्हाट डू वी मीन बाय पेपर कटिंग? पेपर कटिंग का मतलब क्या होता है? आपने पेपर तो काटा ही होगा. जब बचपन में जब नाव बनाते थे तो फोल्ड करते थे, फिर इधर फोल्ड करते थे, फिर इधर कट करते थे, राइट. कहीं से कट करके एक नाव बन जाती थी, समथिंग लाइक दिस. उसी चीज़ को उन्होंने रीजनिंग में डाल दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक बाय द नेम ऑफ पेपर कटिंग, राइट. चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर Z. बताओ क्या होगा? तो मान लो थर्ड, अगर मैं Z को अनफोल्ड करूंगा अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन, मुझे क्या मिलेगा? तो ध्यान से, जब मैं अनफोल्ड करता हूं, और मान लो मैंने एक यहाँ पे एक छेद कर दिया है, एक होल मैंने यहाँ पे बनाया, एक होल मैंने यहाँ पे बनाया, एंड व्हेन आई अनफोल्ड इट, देन व्हाट डू आई गेट? तो व्हेन आई अनफोल्ड इट, विच मीन्स व्हाट? ये डबल फोल्ड में है. जब ये डबल फोल्ड में, जब ये लूप होगा, इधर आएगा, it will turn out to 2 blocks here, so it will be 2 blocks here. और फिर मैं इसको अगर उधर अनफोल्ड करूंगा, 2 ब्लॉक और आएंगे, which means there will be here 1 and here 1, which means the answer for this question is option number 3. Topic is very very easy, you don't have to worry about that. सिर्फ questions का ढर्रा समझना है, ढांचा समझना है, किस तरह से क्वेश्चन आती है. Okay, so the answer for this question is option number 3.
सिर्फ आपको देखना है जहां जहां फोल्ड हुई है उसको रिफ्लेक्ट कर देना अबाउट दैट पर्टिकुलर लाइन। जैसे मान लो इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, सो दिस कम्स हियर। इसको मैंने रिफ्लेक्ट करना है इस लाइन के बराबर, तो ये फिगर बन जाती है, which means there are 4 blocks are formed and hence the answer for this question is option number 3. Okay, yes, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, well done सारा, आदित्य गुप्ता very good, right, समर्थ as usual, आदित्य आनंद, okay, thank you, yes, well done. क्या मैं आगे बढ़ूं? Next question on paper cutting. So today is all about only questions, बहुत सारे questions हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब टॉपिक्स बहुत आसान है, क्यूब एंड डाइस थोड़ी सी ट्रिकी रहती है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऑल विजुअलाइजेशन इज देयर। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, इफ़ यू डोंट गेट द क्वेश्चन इन द फर्स्ट शॉट, खासकर जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं इन द नॉन वर्बल रीजनिंग, इफ़ यू डोंट गेट इन द फर्स्ट शॉट, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, लीव द क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट टेक इट एज एन ईगो इश्यू कि मुझे वो क्वेश्चन करना ही करना है, राइट, आपको क्वालिफाई करना है, right, so go to the next question and you have the freedom to come back to that question anytime that you want, okay, but don't make it an ego issue कि यार verbal non verbal series में नहीं हो रहा तो कैसे बढ़े। and same holds with the verbal series as well, series के question उतने आसान नहीं आएंगे जितने दिखते हैं, थोड़े मुश्किल तो आएंगे ही आएंगे, but आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा question मेरे grip में है, that also I have told you a lot, okay, so same holds with these kind of question। in fact अगर इस तरह के question आए तो पहले इनको करो, राइट, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत आसान है, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म। देखो फिगर को और फिर बताओ कौन सा क्वेश्चन है। Z को मैंने पहले इस पेपर को इधर फोल्ड किया, फिर मैंने इधर फोल्ड किया, फिर वापस इधर फोल्ड कर दिया, सारे को फोल्ड इधर कर दिया। जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ मतलब क्या, डॉटेड लाइन इज फाउंड, और फिर मैं इसको नीचे फोल्ड किया तो इतना ही सॉलिड बच गया, बाकी सब डॉटेड लाइन। अब मैं पेपर को खोल रहा हूँ, तो बताओ कौन सा फिगर बनेगा जब मैं पूरी तरह पेपर को खोल दूंगा। ओके, waiting for the answers. What is the answer? Easy question, I guess. Okay. मुकुल एक बार चेक कर लो। ध्यान से देखो यहां पे, तो यहां पे मैंने फाइनली यहां पे मैंने 2 छेद बनाए हैं। अब मैं वापस इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ, Z को पहले Y के बराबर अनफोल्ड करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएंगे, तो आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस, सो आई एम पुटिंग इट लाइक दिस हियर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जब ये फिगर बन गया है इसको मैं वापस इधर आऊंगा, विच मीन्स दीज सेम थिंग्स विल बी डन लाइक दिस, सो इट विल बी लाइक दिस हियर, सॉरी लाइक दिस हियर, and it will be like this, and now the whole figure is again folded। so अगर मान लो मैं unfold करूंगा इधर और इधर, so this will come here and this will come here, so the answer for this question is option number 3 is the answer। थोड़ा केयरफुल रहना है, ऑप्शन नंबर 3 is the answer, not 2। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे इन दोनों को मैंने अनफोल्ड किया, यहाँ पे आ गया, अगेन आई अनफोल्डेड इट अलोंग द एक्स डायरेक्शन partially like this, so from Y I move it to X direction, and then whatever I have formed it over here reflected over here, then when I got this one and then I am unfolding it, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, so इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 not 4। वेरी गुड, नॉट 4 नॉट 2, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, 4 तो हो ही नहीं सकता है, राइट, 1 का तो सीन ही नहीं है, दो गोले तो बन ही नहीं रहे यहाँ पे, राइट, तो ऑब्वियसली बात है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़े हम लोग, पेपर कटिंग के बाद आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन पेपर कटिंग. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर. अनफोल्डिंग का डायरेक्शन देखो एंड देन अकॉर्डिंगली मेक चेंजेस टू योर फिगर. सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस देखो अच्छी तरह से. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स. I will not draw this. I will just make pure visualization and then I'll mark the answer. I will not draw this. What is the answer for this question? ध्यान से देखो. Yes, अब आ रही है. Very good. बहुत अच्छे. Good, very good. Can I move it now? Tell you the answer. बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है. राइट आफ्टर द इनिशियल हिकअप. तो सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है. अब यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. इफ आई ड्रॉ इट, इट विल मेक इट मोर क्लमजी. तो मैं सिर्फ बताता हूँ आपको. ये ट्राइंगल और ये गोला है. अब इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो ये ट्राइंगल और ये गोला तो इधर भी आएगा, तो ये ट्राइंगल और एक गोला आएगा. अब वापस जब मैं ट्राइंगल और गोला बीच में आएगा, ट्राइंगल और हाफ सर्कल, ट्राइंगल एंड हाफ सर्कल विल कम. राइट, एंड नाउ इट इज अगेन अनफोल्डेड इन द टॉप एंड द बॉटम. The whole thing will be reflected at top and whole thing will be reflected at the bottom. तो obvious ही बात है, ये जब टॉप में जाएगा तो ये उल्टा बन के आएगा ना. ओके, राइट. तो obvious ही बात है, ये भी टॉप पे इधर जब बनेगा एक और ट्राइंगल तो ये उल्टा बन के आएगा. एंड द होल दिस सर्कल विल अगेन कम हियर एज वेल एज हियर. राइट, फिर इसका उल्टा बनेगा नीचे में भी. राइट, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर. Now 3 is not possible, 4 is not possible. देखो यहाँ पे ये लग रहा है, नहीं ये नहीं है, ये है, ऑप्शन नंबर 2 है. ऑप्शन नंबर 2 is the answer. Yes, basically what you are doing only, the figure has been folded and then you are unfolding. When you unfold it and you make necessary signs in the third figure, then what will you get in the original figure? Yes, तो वहां पे आपके पास फोल्ड ऑप्शंस तो होगा नहीं. आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बताना है, समझना है. इनफैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. wherever you are folding and when you are unfolding, then that becomes the normal, जहाँ पे आप reflect कर रहे हो. So reflect it about that point. So first you reflect this whole thing here, then you reflect these, the whatever you get in this here, about this line, and whatever you get, that will be your answer. Very simple. Okay, लगता है difficult, but it turns out to be a very easy question. Okay, आगे बढ़े हम लोग. Okay, let's move on to the next one. Okay, do this one, please. राइट, व्हाट इज द आंसर? पहले इधर अनफोल्ड किया y पे, फिर y को अनफोल्ड किया, फिर z बनाया, फिर z को मैंने फोल्ड किया, देन z को अनफोल्ड कर रहा हूँ अबाउट y एंड देन मेन पेपर. व्हाट डू यू गेट? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है. यस, अब बात बनी. वेरी गुड. नीले सीधी इतने बार आंसर मत दो.
Okay. Option number 2 and option number 3 look same, but the answer will be option number 2. यार सेम है, लगभग ये एक जैसे ही दिख रहे हैं, बट ये बीच में स्प्लिट लाइन नहीं है ना. There is no such thing as split line. The figures will be combined. Figures combine हो जाएंगे, and when the figures are combined, the answer for this question is obviously option number 2. Very good. Can I move ahead now? Okay. Now see this question. अब ये उल्टा क्वेश्चन हो रहा है. मैंने एक फिगर बना के रखा हुआ है, अब मैं फोल्ड कर रहा हूं अबाउट दिस लाइन. देन व्हाट विल बी द फिगर when this main figure is folded about this dotted line? What will you get on the left hand side? Tell me the answer. The concept is same. Till now what you have been given is the unfolded form. Now you are asked about the folded figure. What is the answer? क्या होगा बताओ? तो whatever on the right, मुझे राइट साइड को डिसअपियर रखना है, तो ऑब्वियस ही बात है राइट साइड में जो भी चीजें हैं उसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है अबाउट दिस डॉटेड लाइन ऑन द अदर साइड, एंड जो भी फिगर बनेगी दैट विल बी आंसर. तो राइट साइड के चीज़ों को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ एवरी टाइम, सो दिस इफ यू सी दिस वन, दिस फिगर व्हेन इट कम्स आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स एन इन्वर्टेड डी एंड एन इंक्लाइंड डी, और ये फिगर तो वैसा ही रहेगा, विच मीन्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. राइट? When I am unfolding, when I am folding around this particular line, which means my whole thing is reflected, right? तो अब मुझे reflect करना about this line because right side is disappeared. कई बार क्या होता है in the questions, they make the left side also disappear. Then you have to reflect the left side and make it to the, take it to the right side. अब in this case, the right side is not there, which means what you have to do is whatever is on the right side you have to reflect it along this particular line and make the figure. That's the answer. No, Priyanshu, the answer is not 4, the answer is 3. Third option. Clear or not? Okay, आगे बढ़े हम लोग. Okay, next question, paper folding में. What will be the answer? Good. You all are participating in the class. Very good. Yes, समर्थ 10 बार मत दो जवाब. Yes. Now, the moment you understand the question becomes easy. Now the right side is there, but the right side is not there in the answer, which means हमें right side को reflect करना है about this line. So what will I get? ये अगर reflect होकर इधर आएगा तो ऐसा बनेगा ना, something like this, and this will go away. ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा इज ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर. Okay, so this is how we do these kind of questions of paper folding. Right? Hope your
preparation, how are you finding it, the class? Are you finding the class interesting? Want to know from your side? Yes or no? Okay, let's move on to the next question now. Paper folding coming up. Next question please. Good, very good. ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब जब राइट लेफ्ट हो सकता है तो ऊपर नीचे भी फोल्ड हो सकता है। अब नीचे वाला गायब है, so what is the answer then? वेरी गुड, बहुत अच्छे, yes, very good. So I'm waiting for some more students to participate. Sarah is correct, okay, Mukul is also correct, very good. तो आप तो एक्सपर्ट हो गए हो पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, तो यही क्वेश्चंस आते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में. ओके, सो व्हाट आर वी सीइंग ओवर हियर? व्हाट आर वी सीइंग ओवर हियर? हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि नीचे वाले हिस्से को गायब करना है. तो नीचे वाले को रिफ्लेक्ट करना ऊपर पे. तो अगर इसको रिफ्लेक्ट करो ऊपर पे तो ऑब्वियसली बात ये आएगा तुम्हारा, ऐसा आएगा समथिंग लाइक दिस, और ये ऊपर चला जाएगा, ये भी वैसा ही होएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस विल गो अप, यानी कि ये जो आधा है ये पूरा बन जाएगा और ये गायब पूरी तरह, विच मीन्स ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 2 भी दिया गया है. सो आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपरली करना है. राइट, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. करेक्ट. आगे बढ़े हम लोग. कैन वी मूव अहेड नाउ? ओके, हाँ जी. द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसपे मुझे कई सारे डाउट्स भी आए थे, कई सारे बच्चों के क्वेरीज भी आए थे, विच इज द फिगर मैट्रिक्स. सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स. यानी कि ये इन दोनों से बना है, उसी लॉजिक से ये इन दोनों से बना है, तो अगर वही लॉजिक थर्ड में फॉलो किया जाए तो कौन सा बनेगा? अब इससे हमें याद आ रही है, हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट सेशन में, वेयर आई गिव यू अ बॉक्स ऑफ नंबर्स, तो उसका कोई मीनिंग था. दैट वाज द कर्टन रेजर फॉर टुडे सेशन. उसी जिस तरह से नंबर लॉजिक बनती है इन अ बॉक्स इन अ मैट्रिक्स, ऐसे फिगर का भी मैट्रिक्स बन सकता है. राइट. Okay, very good. What is the logic? What is the logic? Very good, everybody. Well participated, and yes, what is the answer? Answer for this question is option number 4. Option number 4. What is the logic here? Yes. In second something is added, in the third that added part is there. Okay. Added part is not there. तो इन सेकेंड समथिंग इज एडेड, इन थर्ड में एडेड पार्ट इज नॉट देयर. तो यहाँ से मैंने एक ऐड किया है और फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया है. सो द वॉट एवर रिमेन्स इज दिस वन. कंफ्यूज करने के लिए यू हैव गॉट ऑप्शन नंबर 3 एज वेल. यस. तो जो मैंने आपको कल बताया था उसी को यहाँ पे
फिगर लॉजिक में फिगर जिसको कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, वो भी एक पार्ट है आपका बिटसैट का, पैटर्न रिकॉग्निशन। मैं कुछ क्वेश्चन पैटर्न रिकॉग्निशन पे कराऊंगा। पेपर कटिंग डन, पेपर फोल्डिंग डन, राइट। नाउ विल डू सम क्वेश्चंस ऑन फिगर मैट्रिक्स which is basically a pattern recognition of 3 figures. Okay, yes, आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड, यस। यार इसी लेवल के आएंगे, इससे ज़्यादा क्या हार्ड लेवल होगा। अब लेवल या हार्ड या इजी पे, आई मीन इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट्स। इफ यू गेट द लॉजिक इट्स वेरी इजी, इफ यू डोंट गेट इट इजी क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी हार्ड क्वेश्चन, राइट। तो आपने कितनी, क्योंकि अभी आप ग्रूव में हैं, अभी आप गियर में हैं, आपने आप फटाफट आप आंसर दे रहे हो, तो वही माइंडसेट होना चाहिए। ओके, तो यू आर सीइंग कि यार एक फिगर ऐड हुआ, एक फिगर डिलीट हो गया, बस द आंसर इज 4। और यही क्वेश्चन आप कह सकते हो हार्ड है, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो थर्ड इज नॉट द आंसर, यू नो दैट वाई, यू योरसेल्फ आर आंसरिंग मी। फिर सर थर्ड नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सर इसके लिए, सर एलआर के लिए कितना टाइम देना चाहिए बिटसैट में? जितना टाइम होता है उसका 40% टाइम देना चाहिए, 40 से 50%। whatever you think that you have to allocate a time, then you allocate only 40 to 50% of time. That will be more than enough, right? Focus on your physics, chemistry, maths part obviously, but जब आपको लग रहा है कि you are in the groove and you are confident enough, you can answer nearly all the questions. Obviously, but there is a negative marking negative marking भी होता है, so you have to be very, I mean, conscious of that part. So if you are confident, go ahead, right? कुछ, I mean, कोई वो नहीं, कोई टेंशन नहीं है, you can attempt all the questions. Okay, इंग्लिश और एलआर में टोटल कितना टाइम लगाएं, ये आपके कंफर्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ओके, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वोकैब होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड ऑल दीज थिंग्स। इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द पैसेज एंड एवरीथिंग, आई मीन, then you go ahead and answer the questions. But my suggestion is, when you have a group based question, don't answer all the questions. Okay, and whatever time you lose, whatever जो आपको बैकलॉग रह जाता है इंग्लिश में, आप अपनी सारी कसर यहाँ पे पूरी कर सकते हो in the LR section, right? You need to have a balanced approach. It all depends on at what moment you attempt this LR and English section. If your physics, chemistry, maths have been good, right, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा, you can easily attempt this section. You can carry forward that confidence into these 2 sections. Okay, if you are feeling really confident, and I am saying that if you are feeling really confident, then my suggestion is attempt this section first. Clear हो जाओ पहले इस section से as much as you can, and then give your full energy to that, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर भी आपको मिलेगा। इफ यू गेट से 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हियर, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट सेक्शन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। Mukul, hopefully I have answered your question. Attempt these questions, please. What is the logic? Very good. Very good, very good. What is the logic here? Second part, corners become dot. Okay, there is first x, the plus first and 3, and there is 4 circles. Okay, बहुत आसान है, very easy, right? So बहुत मिसमैच ऑफ फिगर्स दिया हुआ है, बट अल्टीमेट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। यहाँ पे देखो 2 एडिशन लाइन दिया हुआ है, और थर्ड में 2 एडिशन लाइन हटा के उन दोनों लाइनों पर सर्कल दे दिया गया है।
यहाँ पे दो एडिशनल लाइन, प्रोपोर्शनल लाइन, सिमेट्रिकल लाइन बनाया गया है। इन द थर्ड फिगर उन सिमेट्रिकल लाइंस को हटा के सर्कल बना दिया गया। ओके, यहाँ पे भी दो लाइन ऐड किया गया, उन लाइंस को हटा के यहाँ पे सर्कल बनेगा। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। वेरी इजी। yes 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 the cross becomes dots outside. Yes, second part corner. Yes 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 lifted lines are replaced by dots at corners, end of diagonals get replaced with circles. Yes, very good, good, very good. आगे बढ़े हम लोग. Okay, let's move on to the next question on figure matrix. Give me the answer of this question. End of diagonals get replaced with circles. Very good. ओके, यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. मुकुल 3-4 बार जवाब मत दो, एक ही बार जवाब दे के यस. कंफर्टेबल, डोंट वरी. अदर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई. Yes, the answer for this question is option number, majority wins, option number C. Yes, Mukul Sharma, Ishan, Nishan, Neetu Singh, Samarth, very good. Subrata Sahu keh raha hai, please tell. Okay, yes. So what is the answer is option number C, Y. What is the logic? यार थर्ड पार्ट में जो फिगर है, जो भी फिगर आ रही है, इट इज कॉमन टू द फर्स्ट टू पार्ट्स, इजंट इट? ध्यान से देखो यहाँ पे, इन द थर्ड फिगर आई एम ड्रॉइंग अ थर्ड फिगर, द वॉट एवर आई एम गेटिंग इट इज कॉमन टू द फर्स्ट टू पार्ट्स. जिसे कहते हैं ब्रैकेट में जब कॉमन लेते हैं, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. ओके, सो आई हैव टू टेक अ कॉमन थिंग विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. दिस इज व्हाट आई फील. Answer is option number C, right? Common to two parts is the dot here. Common to two parts is the dot. That's why the answer is 3. Option number 4 नहीं होगा. किसने 4 भी कहा है? Right, नहीं 4 नहीं होगा, 3 होगा. पहले और दूसरे में जो भी कॉमन है वो हम तीसरे में डाल रहे हैं. पहले और दूसरे में जो भी कॉमन आ रहा है, आई एम पुटिंग इट इन द थर्ड फिगर. That's it. ओके, कैन आई मूव इट? हाँ जी, सही बोल रहे हो शिवांश, बहुत अच्छे. दिव्य ज्ञान का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, सेलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स. क्या बात है, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यार ये तो मस्त क्वेश्चन है. See which, okay. What is the logic? Logic कहो यार. लॉजिक क्या कहना है, बहुत आसान है. What is the logic? Everybody. Yes. 1 + 2 = 3, वो तो सही है. बट विच वन? वर्टिकली 1 + वर्टिकल 2 = वर्टिकल 3, और हॉरिजॉन्टल 1 + हॉरिजॉन्टल 2 = हॉरिजॉन्टल 3. ईशानवी,
black box increase in row. Black blocks increase in row. Yes. So if I increase the number of black blocks, 2, 3, then 4 पूरा भर जाएगा. 1, 2 and then 3 पूरा भर गया. Okay. So the answer for this question is option number 4 is the answer. Yes, very good. C minus B is equal to A. Yes. Okay, आगे बढ़े. Very good. So this is all about the pattern recognition. Figure matrix में you have to understand the pattern recognition. Figure formation, अब ये भी बहुत critical area है, बहुत critical area है. अब इसके लिए you have to be very careful as to what is, now these kind of figure questions are a little bit difficult. आपको combine अगर करना है तो कौन सा figure बनेगा, you have to tell me. If you combine these 3 figures, which figure you will get? And you have the freedom to change that, I mean to change the calibration of the figure. आप ये horizontal इसको vertical भी कर सकते हो, ये vertical इसको horizontal भी कर सकते हो, ये horizontal like this, you can change it to other side as well. Which figure will be formed? Very very good, क्या बात है. Yes, 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 I think so. Tell me the answer. एक 1, 2, 3, 4, 5 एक पेंटागन, एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्राइंगल. ओके, एक पेंटागन, एक क्वाड्रिलेटरल, एक ट्राइंगल. Which one is being formed? Okay, if you carefully see, then this is the pentagon, this is the triangle, and this is the quadrilateral. So option number 1. So which figure is formed by combining the 2 figures? This is also a very important part. इसके questions भी आते हैं. Figure formation. Yes. Okay, but generally this is a tough part. Okay. So your visualization has to be proper. I don't have papers here कि मैं कट करके ज्वाइन करूँगा. मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखूँगा. मुझे दिख रहा है कि यार 2 तो हो ही नहीं सकता है. यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल है, राइट. 3 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 2 क्वाड्रिलेटरल है. 4 होने के लिए ये तो पेंटागन बन रहा है, बट यहाँ पे दिस इज नॉट वर्किंग, ये बेंड है, यानी कि 4 नहीं हो सकता. सो आई कैन यूज लॉजिक, आई कैन यूज ऑप्शंस टू सॉल्व. Not a problem. I will not use poll right now. Most important is to get the question correct. Yes, poll वो अभी नहीं करने का टाइम है, बहुत सारे क्वेश्चन है. ओके, चीज़ें सीखनी है, तो मुझे दिख रहा है कि कौन कैसे कैसे दे रहा है. आई एम लुकिंग एट दी चैट्स एज वेल, सो डोंट वरी. ओके, कैन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Okay, universal choice, very good. Yes, good one, very good. Option number 2, I don't need to tell what is the logic. चारों को ज्वाइन करो, it becomes a square, and 4 parts join, ये बीच वाले जो है 4 parts, it becomes the 4 parts of the square. Very good. Okay, आगे बढ़े हम लोग. Can I move ahead now? So this is what the figure formation is all about. You just have ये parts isolated है, आपको combine करना है, कौन से figure में बनेगा. Okay, okay. Can I move ahead now?
Right. Next question, please. Go ahead. ध्यान से देखो एक बार अच्छी तरह से. Okay, looking at the chats. Okay, very good. Excellent. The answer is obviously बात है option number yes, समर्थ, ईशानवी, everybody सभी एक ही ऑप्शन बता रहे हैं. थ्री नॉट फोर. 4 नहीं होगा क्योंकि 4 में एक ये भी बन रही है एंड दिस इज अ राइट ट्राइंगल विच इज लाइक दिस. ये राइट ट्राइंगल नहीं दिख रही है. सो 4 इज नॉट द आंसर, 3 इज द आंसर. नहीं 4 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ राइट ट्राइंगल काइंड ऑफ थिंग और ये थोड़ा बेंड ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लग रहा है. सो 4 इज नॉट पॉसिबल, 3 इज द आंसर. वेरी गुड. अब ये कह सकते हो एक टफ क्वेश्चन था. ओके, कैन आई मूव एट नाउ? Yes. Shivansh agrees with me. Okay. नहीं, 4 is not possible. Mukul. Okay. 3 is the possible answer. कि इन फिगर्स को ज्वाइन करके जो बनता है वो यही बनता है. 3 is the answer. Can I move it now? Okay. आगे बढ़े. ध्यान से. I hope you are able to see the question properly. Okay, try it everybody. So in the meanwhile, let me also tell you, please join our POIQ channel, right? The link of which is given in the description box. Also the class notes for today's class as well as yesterday's class is also given in the description box. So click the like button as well and subscribe to our channel, right? You will get more such good videos on this, right? Of all the PYQs of all the exams. Okay, go ahead, make a choice. कौन सा आंसर होगा? क्या बात है, सब एक्सपर्ट बन गए. वेरी गुड. व्हाट इज द आंसर? यस, मैक्सिमम इज गिविंग 2. ऑप्शन नंबर 2. ओके, ध्यान से देखें बन रहा है कि नहीं, देखते हैं. ये वाला इससे बन रहा है, दिस सर्कल इससे बन रहा है लाइक दिस, देन दिस वन लाइक दिस एंड दिस वन. इसको मैंने बेंड कर दिया. सो 2 इज द आंसर. 3 नहीं बन रहा है. इफ एनीबडी इज सेइंग 3, नोबडी इज सेइंग 3. वेरी गुड. 2 बन रहा है. तो नाउ यू आर गेटिंग इट क्वाइट, एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट इन द नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर फॉर्मेशन, राइट? बट इफ यू आर गेटिंग दिस वन, क्वाइट गुड. ओके, कैन आई मूव इट नाउ? ओके, फिगर फॉर्मेशन में अगला क्वेश्चन, लेट्स सी. हाँ जी, कौन सा बनेगा?
श्योर? बहुत कंफ्यूजन है ये, वेरी गुड, बहुत कंफ्यूजन है। ओके, 3, 2, 1, क्या बात है। पहली बात तो बता दूं, 2 तो नहीं हो सकता है। 2 होने के लिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 4 ही ट्रायंगल है। 1 में बनाने की कोशिश करते हैं यार, 1 भी पॉसिबल है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन लग रहा है। दिस 1, 1, 2, 3 एंड देन एंड देन 4, 5, नहीं 1 नहीं हो सकता है। द ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। यस यस यस, थोड़ा सा सोचना पड़ा यहाँ पे, बट द थर्ड ऑप्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब नीचे स्क्वायर्स बन रहे हैं तो 2 ट्रायंगल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर 2 छोटे स्क्वायर बनाओ तो 4 ट्रायंगल और 1 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। सो 1 इज आउट, 4 इज ऑब्वियसली आउट। 4 में बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। 2 तो कोई बात ही नहीं, तो ऑप्शन बचता है 3 बचता है। आपको सिर्फ 1 और 3 में चेक करना है। 1 इज नॉट पॉसिबल, 3 इज पॉसिबल। यस, वेरी गुड। आगे बढ़े हम लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली, ओके दिस इज 1। ये थोड़ा कार्टून को थोड़ा सही कर दो। Find how the figure will look like after rotation. रोटेशन यानी कि सबका ओरिएंटेशन सबके लेफ्ट और राइट में सेम होनी चाहिए। Think a little bit, please. Very, very good. 4 is the answer. Yes. And 1 and 2 तो meaningless है. 4 is the answer. Yes. Four is the answer. Yes. Very, very good. Okay. अब इसके बाद ये चलते हैं. Now this is about the figure formation part. अब मैं आपको बताता हूँ dot fixing situation. What is this dot fixing situation all about? Now focus on this part. ये मैंने initial में दिया नहीं था, but it is a very important part of your class. Dot fixing situation में ये है कि आपको जैसे मान लो इस फिगर में एक डॉट है, दूसरा डॉट है, तीसरा डॉट है, right? Now the first dot lies at the intersection of the circle and the square. The second dot lies inside the rectangle, square and triangle. Third dot lies inside the rectangle and a triangle. Clear? अब यही 3 डॉट को अगर मान लो इसी पोजीशन में दिया जाए तो कौन से फिगर में दिया जाएगा? Which figure should I keep it? Which figure should I keep it? This dot, these dots, right? So that the logic is satisfied. कि यार पहला डॉट जो है it will be at the intersection of the square and the circle. The second dot should be at the intersection of the rectangle, triangle and a square. Okay, rectangle, triangle and a square, and the third is at this point. So tell me, which is the answer? Think a little bit. ध्यान से देखो. The first dot should be at this one, at the intersection of
ट्राइंगल एंड सर्कल, तो ट्राइंगल एंड सर्कल, अगर मान लो मैं देखूं, मैं कोई सा भी ऑप्शन देख लेता हूँ, ट्राइंगल एंड सर्कल। सो फर्स्ट डॉट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल। यार ये तो जम नहीं रहा है, ट्राइंगल सर्कल में ये बन तो रहा है पहला डॉट, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, सॉरी ट्राइंगल एंड नॉट ट्राइंगल एंड द स्क्वायर। सो ट्राइंगल एंड स्क्वायर में तो स्क्वायर एंड सर्कल, आई एम वेरी सॉरी, स्क्वायर एंड सर्कल में फर्स्ट डॉट आ रहा है, राइट? तो स्क्वायर एंड सर्कल में फर्स्ट डॉट यहाँ पे डाल देता हूँ, से दिस वन, okay. The second dot is at the intersection of the triangle, rectangle and square. So triangle, rectangle and square में दूसरा डॉट जम नहीं रहा है, so one option is out, first option is out, okay. first के बाद सीधा मैं fourth पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। This first circle, first dot is at the intersection of the circle and the square. सर्कल एंड द स्क्वायर पे फर्स्ट डॉट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आई कैन प्लेस अ डॉट लाइक दिस हियर। द सेकेंड डॉट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। सो रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आई कैन प्लेस अ डॉट लाइक दिस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। एंड द थर्ड डॉट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ the rectangle and triangle. So rectangle and triangle, यहाँ पे मैं थर्ड डॉट यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड? यू हैव टू सी दिस डॉट्स आर प्लेस्ड ओवर हियर। उसी लॉजिक से अगर मैं डॉट्स को यहाँ पे प्लेस करूँ कि भाई ये डॉट यहाँ पे आए बिटवीन दीज टू फिगर्स, ये डॉट इन तीनों फिगर पे आए, ये डॉट इन दो ही फिगर पे आए, तो कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है? दैट इज द क्वेश्चन विच इज आस्किंग, विच इज आस्क्ड ओवर हियर। सो आई विल नॉट वेस्ट टू मच ऑफ अ टाइम, ये भी थोड़ा टफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। सो आई हैव गिवन यू एन आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके, राइट? कैन आई मूव एट नाउ? डॉट फिक्सिंग सिचुएशन। सो वन मोर क्वेश्चन, डॉट फिक्सिंग सिचुएशन, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो है बट टाइम भी देखना है, राइट? वेरी गुड, गुड एनफ, गुड एनफ, प्लीज गो अहेड। Where can I place these dots? Where can I place these dots? If these dots are placed over here in these three figures, then अगर उन्हीं तीनों डॉट को मान लो इन चारों फिगर में दिया जाए, तो कौन से फिगर में ये तीनों डॉट उस प्लेसमेंट को सेटिस्फाई करता है? वेरी गुड, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट डॉट इज एट द इंटरसेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ, फर्स्ट डॉट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। तो सर्कल एंड द स्क्वायर पे फर्स्ट डॉट मैंने दे दिया, ओके, सर्कल एंड द स्क्वायर। द सेकेंड डॉट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द ट्राइंगल and the rectangle and the square. So triangle, rectangle and the square, यहाँ पे मैं दूसरा डॉट प्लेस कर सकता हूँ, okay. And the third dot here, this is inside the rectangle and the square. So rectangle and the square, rectangle and the square पे कौन सा जगह है? कोई जगह ऐसा है जहाँ पे rectangle and square ही आ रहा है? I think there is a small here, there is a small place here, so possibly one is the option. Yes, one is the option. Okay, good. Can I move ahead now? So this is about the dot fixing situation. I'm jumping some of the questions here and I'm moving over to, you can pause the video and then you can attempt it at your own time after the class gets over, so that we have got some more questions to do, okay. So these are some of the questions. I am pausing for a moment. You can attempt these questions later on, right? Pause this video and then attempt these questions later on, okay.
And anyway, if the class gets over before, I can come back to these questions, okay? Next comes a little bit of mirror images, a little bit introduction of mirror image that we need to know, right? I can come back to dot fixing situation, don't worry, right? But let's have the questions on mirror images. What is a mirror image of this figure? Please tell me. The mirror image, कोई बात ही नहीं है. What is the difference between mirror image and water image? What is the difference between mirror image and water image? Yes. Yes, good one. Mirror image means, आपको पता है, reflection. Water image is just if you place the figure like this. If I draw a figure, so whatever figure is at here, if I reflect it literally like this, but if I reflect it downwards, it will be like this. So this is the water image and this is the mirror image. Okay, right? So what is the mirror image of this? Beautiful, that's an easy question. Option number 4 is the answer. Okay, quickly, let's move on to the next question of mirror images. What is the mirror image of this one? Tell me. Okay, good. Quickly, you are responding quite fast. Nahi, Shivu. The answer is not 4. ध्यान से देखो, the answer is not 4. Image distance, object distance, जैसा इधर है वैसा इधर है. So I think the answer is option number 2, not 4. Yes, the option is 2. Okay, can I move ahead now? Mirror image के बाद next one. Quickly, what is the answer for this question? Okay, waiting for your answers. Very good. Yes, शिव इस बार करेक्ट है. Okay. So answer for this question is option number 3. Yes, बहुत आसान है. So this is option number 3 is the answer. Okay. Can I move ahead now? Yes. Good. Quickly moving on to the next question. Yes. What is the mirror image of this one? Sarah has also answered the question. So mirror image can be of the words as well. So 1965 Indo-Pak, बहुत tough है ये, right? So I'll go by majority vote and I'll check the option from your responses. Okay, let me check it. 1965. So 1965. So and I का I, N उल्टा is N. Okay, mirror image मैं कह रहा हूँ. D is like this. Okay, O is like this. P. Okay. Fourth option. Yes, very good. बहुत अच्छे.
Okay, fourth option. So mirror image is this one. Now let's move on to a little bit of water images. Now which is the correct water image? अब मिरर इसके नीचे रखना है, मिरर इसके नीचे रखना है, and then you have to tell the answer. Yes, Aditya, you are right. Very good. मिरर इसके नीचे रखना है and then you have to tell the answer. थोड़ा सा फिगर ब्लर दिख रहा है, so please bear with that. Make it into full screen and then see the question. ध्यान से प्लीज. यार 1 और 4 तो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. I mean sorry, 1 and 3 will never come. 4 तो हो सकता है. 2 and 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा. Okay, so let's focus it a little bit. So if I see this arrow goes up, this arrow goes down. This is ऊपर नीचे, so it will be नीचे ऊपर, and this will be at the top, and this is down, so this is at the top. So option number 2 is the answer. Yes, सेम है दोनों? नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है. ये जो गोला है, इस गोल, ये अगर आप ये गोला देखोगे, इट इज समथिंग लाइक दिस. इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा नीचे में? इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे सेम नहीं है, ये डिफरेंट है. दिस इज डिफरेंट, दिस इज सेम. दिस इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वन. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, नॉट 4. वेरी गुड. यस, सेम नहीं है. ओके, आगे बढ़े. हाँ जी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा. प्लीज टेल मी द आंसर. मिरर, इसका वाटर इमेज बताना है आपको. चूज द करेक्ट वाटर इमेज. यस, आई एग्री विथ यू. A little bit blurry, yes. Very good. Thank you so much for cooperating. Yes, an image is a little bit blurry, but make a guess, make a intelligent guess. Okay. ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ इन तीनों में ही आपको ब्लरी दिख रहा होगा. So it is like this. If you see it like this, ये वाला इस तरफ है. It is like this, majority with colored, and this is maximum colored, and this is maximum colored, something like this. Okay, so now what will come here in the image? It will be in the D figure. ध्यान से देखो. Yes, majority of them you are correct. The option is option number 4. Option number 2 नहीं है, option number 4. Because option number 2 में the reflection of this is the reflection of ये नहीं हो सकता है. So option number 2 is not the answer. Okay, option number 2 is not the answer. Option number 2 is not the answer. यहाँ पे ध्यान से देखो, option number 4 is the answer. Okay, let's move on to the next water image question. Which is the correct water image?
Think a little bit, please. Yes, बहुत अच्छे, very good. Yes, Samarth, Anu, everybody is correct. C is the option. Yes, C is the option. So this is about the water image. Now I am doing a little bit of revision of the some of the topics which we have done. So I have taken a question of series. The last 5-7 minutes I will dedicate it to the series part. So I have taken 2-3 questions for you. Can you please tell me what will be the next term? Now this was all about the non-verbal reasoning part. Now I have taken a small revision. I will take a small revision of the verbal reasoning part. Okay. So what will come in place of the question mark? "12, 7, 9, 22, 96, question mark." It's 12. What is the logic? Subrato, what is the logic? "12, 5, 7, 9, 22, 96, what question mark? What will be the correct option from the 5 options? Logic has to be consistent. No, 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 no. पहले डिक्रीज हुआ है देन इंक्रीज हुआ है मार्जिनली. Think a little bit. First it has decreased and then it has increased. Okay, I will wait for 1 minute more, 1 or 2 minutes more, and then I will give you the answer. No, 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 no. Okay. Okay. "12 into 0.5 plus 1 is 7. Yes. I am still waiting for the replies from your students. Now can you tell me the next term? 7 से 9 कैसे बना? 7 into 1 plus 2 is equal to 9. Yes, students are replying it. Okay, 9 into 2 plus 4 is 22. Right? 22 into 4 plus 8 is equal to 96. Into 0.5 into 1 into 2 into 4, so into 8 होगा. Plus 1, 2, 4, 8, 16. So it will be 768 plus 16 is 784, and hence the option is option number 2 is the answer. Yes. एक बार लॉजिक समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 6, 4, 10, 14, 43, what's the answer?
अब इसमें भी वही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, मल्टीप्लिकेशन माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, ये हिंट है, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस. Waiting for your answers. Six, 4, 10, 14, 43, question mark, what is the next term? 6, 4, 10, so can I attempt it? Think a little bit. Okay, 6, 4, 10, yes. नहीं ईशानवी, थर्ड में जम नहीं रही है लॉजिक. पैटर्न कहाँ है? सही बात है, पैटर्न कहाँ है? ओके, 6 into 1 minus 2 is equal to 4. 4 into 1.5 plus 4 is equal to 10. 10 into 2 minus 6 is equal to 14. 14 into 2.5 plus 8 is how much? 43. Clear? 43 into 3 minus 10 is 119, and hence the option is option number 1. First option. Okay, and the final question of the day. The final question. अब इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेन का खेल है. इसमें ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है. This is the hint for this question. We have got yes, but इसमें आपको हिंट बता दूं, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे टाइप के भी होते हैं जब पैटर्न ना प्लस, ना माइनस, ना डिवीजन, ना मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी पता नहीं है, but this just the placement of the digits is what makes the difference. Okay, if you can answer within 30 seconds. I have given you the hint, by the way. Very good, beautiful, very good. सबसे पहले किसने दिया? शिवान सिंगार, then स्वास्तिक रस्तोगी. Very good. Digits in pattern, very good. 1, 2, 4, 8, then 16. 2, 3, 4, 5, then next digit is 6. 1, 3, 5, 7, the next digit is 9. So 16, 69 is the answer. So patterns can be weird as well. नहीं, कोई डिजिट इंटू 2 नहीं है. यस, फर्स्ट डिजिट इंटू 2 है, देन मिडल वाला जो है पैटर्न में जा रही है, और थर्ड वाला जो है 1, 3, 5, 7, 9 के हिसाब से जा रही है. ओके, दिस वाज आवर सेशन ऑन BITSAT. थैंक यू सो मच. I hope you enjoyed the session. I discussed all kinds of questions. Please visit the links of all the previous lectures or today as well as yesterday in the description box below. And I hope we'll continue to give you some more good lessons on various topics of other exams as well. So please subscribe to our channel, and wonderful teaching you. All the best for BITSAT exam. Thank you so much. Thank you so much.